हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लोडिंग स्क्रीन लॉजिक देखा हमारे इस यूआई कंट्रोलर और यू नेविगेशन सिस्टम के इस सीरीज़ में। अब ये हमारी तीसरी वीडियो है। बेटर कि अगर मैं इन वीडियोस को शॉर्ट रखूं और बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए आई एम अनेबल टू रिमूव इट फॉर नाउ, but let's see what we can do in future videos. अब हम देखेंगे मेन मेन्यू पैनल को. So we will just enable it, and also let's move loading screen to the bottom just above, actually here. So loading screen को मैं फिलहाल disable कर दूँगा, and we'll have to add function for these buttons in our UI controller. So इसको ओपन करें and add our that will be main menu logic. इसमें मेन मेन्यू के प्ले बटन लॉजिक होगा और जितने भी बटन्स हैं उनके लॉजिक्स होंगे. वी विल हैव एट सम पॉइंट लेटर वी विल हैव आवर लोड स्कोर्स और लीडर बोर्ड डिफरेंट फंक्शंस, उनको भी हम इसमें ऐड करते जाएंगे. सो सबसे पहले तो रेफरेंसेस की बारी है. सो हम ऐड करेंगे CLS field and then we'll add private game object, then we will have main menu panel, and okay, I think there will be no panel for now, or let's add gameplay panel for gameplay panel. चूँकि प्ले बटन से लोडिंग स्क्रीन चलेगी. करंटली लेवल मेन्यू नहीं ऐड किया हमने, क्योंकि मोस्ट गेम्स में लेवल मेन्यू नहीं होता, जो कि एंडलेस गेम्स हैं, कहीं उनमें कई दफ़ा नहीं होता. बट वी विल ऐड लेवल मेन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो. So there would be a function, and let's realize this field too. So we will have a function public void and play. Or just play button. That is okay. So इसका काम होगा कि इसने जस्ट गेम प्ले कर देंगे. फॉर नाउ इसको मैं एम्प्टी रखूँगा. I will add another function, and that would be options. Okay, that function will be view options, and you would definitely need a reference for options menu. So CLS field again, and it is a private game object. What we will do is that and
also we will load, first of all we will options preferences and currently actually कुछ मेन्यूज में हम लोगों ने बैक का बटन भी ऐड करना है, जैसा कि ऑप्शन मेन्यू. सो वी विल हैव अ बटन दैट विल नेविगेट बैक टू मेन मेन्यू. उसके लिए भी कोडिंग करनी पड़ेगी हमें. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट देयर आर डिफरेंट वेज कि आप ऑप्शंस मेन्यू ओपन क्लोज कर सकें, बट आई वुड प्रेफर एज कस्टम फंक्शंस. यूनिटी के बिल्ट इन भी सिस्टम है कि मैं जस्ट गेम ऑब्जेक्ट का सेट एक्टिव वाला फंक्शन डायरेक्टली बटन पे लगा दूं तब भी हो जाएगा, बट मेरी प्रेफरेंस में ये है कि मैं इसको यहाँ पे लिखूँ, क्योंकि आई वुड नीड टू शो सम इफेक्ट्स एट सम लेटर स्टेज. सो मेरे पास फ्रीडम है इस तरह इस्तेमाल करते हुए उसको कि मैं उसमें कोई भी चीज़ ऐड कर सकता हूँ ग्रांड फंक्शन. सो दैट विल बी जस्ट एनेबल or set active true or options menu, and that would be great. So, and there will be another function that we will have close options menu. So that function will close this menu. Again हम लोग सिंपल बटन भी यूज़ कर सकते थे बैक का, एंड लेट्स यूज़ दैट बटन फॉर दिस फंक्शन. आई थिंक वी वोंट बी नीडिंग अनदर फंक्शन फॉर दैट. सो प्ले प्रेस हो गया. देन देयर विल बी आवर 3 more functions, and the general purpose functions public void, that would be wait. Then there would be public void share. We will add sharing at later stage, wait, share, and open URL or more apps. Public void. There can also be another button named public void exit game, क्योंकि कुछ गेम्स में ये बटन भी होता है. सो आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं, न्यू बटन ऐड कर सकते हैं. सो आई वुड जस्ट राइट एप्लीकेशन डॉट एग्जिट और क्लोज. क्विट. सो क्विट क्या करता है, प्लेयर एप्लीकेशन को क्विट कर देता है, क्लोज कर देता है. एंड मोर एप्स एप्लीकेशन डॉट ओपन यूआरएल सो यू हैव टू गिव यूआरएल हियर ताकि ये ओपन कर सके. एंड we will use a third-party plugin for that purpose, and for readers we will also open some URL. So that will be our main functions for. अब असाइन करते हैं इन functions को और देखते हैं क्या होता है. Okay, let's open gameplay menu here. So what we will do is that we will disable main menu and gameplay menu panel will be enabled. Set it to true. So आप अपने सजेशंस भी दे सकते हैं मुझे कि हमें इसमें और क्या चीज़ ऐड करनी चाहिए. And after finalizing this code, I will share GitHub repository link for everyone. So तमाम लोग उस कोड को डाउनलोड कर सकें, यूज़ कर सकें. एंड वक्तन फ़वक्तन मैं उसके चेंजेस भी करता जाऊँगा.
सो मेन मेन्यू के इस बटन्स के अंदर ओके वन मोर थिंग, गेम टाइटल का टेक्स्ट भी आप दे सकते हैं, बट आई थिंक डोंट सो कि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सो मैं इन तमाम बटन्स को कि ऑन क्लिक इवेंट पे ऐड करूँगा UI controller, and then I will assign different functions to different buttons. Let's say play बटन है तो इसके लिए मुझे UI controller के एलिमेंट का फंक्शन, एक्चुअली आप ने जब रेफरेंस दे दिया उस एलिमेंट का या उसका गेम ऑब्जेक्ट का, देन आप उसके तमाम कंपोनेंट्स को गेट कर सकते हैं। उसके पब्लिक फंक्शंस यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे आपको, जैसे कि अभी आपको प्ले प्रेस एक्सेट्रा और बाकी फंक्शन जैसे विजिबल हैं। देन जो रेफरेंस है वो चेंज हो जाएगा उस स्क्रिप्ट पे, क्योंकि हमने स्क्रिप्ट यूज़ कर ली है, मतलब हमने स्क्रिप्ट का कोई फंक्शन कॉल किया है यहाँ पे। पहले भी बता चुका हूँ अपने स्टूडेंट्स को मैं, और जिन लोगों को नहीं इस चीज़ का आइडिया उनके लिए मैं दोबारा बता देता हूँ कि यूनिटी का जो है ना नेविगेशन सिस्टम और UI सिस्टम, ये इवेंट बेस्ड सिस्टम है। मोस्टली आपने इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग सुना होगा कि हर एक इवेंट के रिस्पॉन्स में कुछ ना कुछ होता है। सो नाउ वी आर एडिंग अ रिस्पॉन्स फंक्शन और इवेंट हैंडलर टू दिस बटन्स ऑन क्लिक इवेंट। So we will have an options button here. I think there should be an options, and there should be view options. Then rate here. Rate us. Okay. Rate us जो है अभी शायद वो एरर दे, चूँकि मैंने URL नहीं डाला हुआ इसमें। सो आप अपनी ऐप का URL या अपने ऐप स्टोर लिंक, एप्पल का है तो एप्पल का लिंक आप देंगे, गूगल है तो गूगल का लिंक देंगे, वो भी हम इन फ्यूचर वीडियोस हम इसमें ऐड करेंगे चीज़ें। एंड दैट वुड बी मोर एप्स। ओके, हियर गोज मोर एप्स। सो करंटली अगर हम इसको चलाएं तो अभी मेरी लोडिंग स्क्रीन ऑफ थी, बट अभी मेरी लोडिंग स्क्रीन इनेबल होगी, एंड दैट वुड एंड लोडिंग, एंड वी विल हैव अ गेम टाइटल। Main menu screen opened here, and हमने कुछ जो रेफरेंसेस हैं हम मिस कर चुके हैं, हमने वो ऐड नहीं किए। सो हम वो रेफरेंसेस ऐड करते हैं, इसकी वजह से एरर आया। सो देयर वुड बी ऑप्शंस मेन्यू, एंड देयर वुड बी गेम प्ले मेन्यू, and then we will have a result menu after that. Okay, so here goes the gameplay menu. So आज की वीडियोस ये वाली कितनी है। मैं नेक्स्ट वीडियोस जो हैं वो मे बी कुछ डिले के साथ या 2 दिन की डिले या 3 दिन की डिले के बाद ऐड करूँ, बट उन वीडियोस में हम लोग गेम प्ले भी ऐड करेंगे थोड़ा बहुत, ताकि हम या कुछ एक सिंपल गेम प्ले ऐड कर देंगे, या वैसे ही जस्ट ऐड कर देंगे बूलियन वेरिएबल्स कि जिनके ज़रिए हम गेम ओवर करवा सकें। एंड देन वी विल लुक इनटू गेम मैनेजर स्क्रिप्ट, एंड वी विल यूज़ दैट एज अ सिंगलटन इंस्टेंस आल्सो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।